Good morning, India. Good morning, everybody. Yeah, good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Morning, doctor. Yeah, good morning. Good morning, DXN. So, welcome to this great program that is a 250th day celebration of the RVC YouTube channel. First of all, I have a pleasant duty to welcome our beloved and respected CEO, Dr. Lim Sujan, for this great celebration. So, on behalf of everybody, I thank our CEO, Dr. Lim Sujan, for taking part in these celebrations. I would like to introduce DATUK Dr. Lim Sujan. Of course, he doesn't require any introduction for the DXN family, but still, it's a pleasant duty for me to say a few words about our beloved CEO. As all of you know, DXN was founded by our Dr. Lim Sujan in 1993. He had his graduation from the Indian Institute of Technology, and he had a deep interest in mushrooms and the relationship with the human health. After more than 20 years of careful research and scientific analysis, Dr. Lim Sujan discovered the specific benefits of Ganoderma or Lingzi and its corresponding effects on the human health. Realizing the Lingzi's importance and health benefits, Dr. Lim Sujan began sharing his knowledge about this miraculous herb among his friends and colleagues and mirrored his passion for good health. He had a great passion for people to have good health. That is why he promoted DXN company and started the DXN company in 1993. So we have come a very long way, almost 28 years now from 1993, and we are into 28th year. So we should all be proud of ourselves to be a part of this big DXN family. And to mention few of the achievements and rewards given to our beloved CEO. It's a long list, but anyhow, I'll make it as short as possible. In 1997, he was awarded the doctorate in philosophy in alternative medicine by the Indian Board of Alternative Medicines. In 2001, the BKM Award for the Sultan of Kedah, Malaysia. In 2002, he was awarded many prestigious recognitions and awards. Doctorate in Science in Alternative Medicine by the Indian Board of Alternative Medicine. Millennium Award by the International Association of Educators for World Peace in recognition of his steadfast commitment to world peace and friendship through the holistic health and healing, thereby promoting a physically healthy and mentally strong, socially developed society. He was awarded the most prestigious award, Albert Schweitzer Award, by the Positive Life Foundation in appreciation of exemplary humanism, untiring peace activities, and profound compassion in the spirit of the late Albert Schweitzer, a 1953 Nobel Prize recipient. He was awarded the DSM Award in 2001, that is from Malaysia. A physician of the New Millennium Award by the Alternative Medicine of Research Institute, Canada.
certificate of appointment as senior visiting professor, natural healing and gynotherapy by the Open International University of Alternative Medicine. In 2005, our beloved CEO was awarded by the Sultan of Kedah, Malaysia, the DSDK award. And he was also awarded the Mother Teresa International Award for 2004. In 2007, Gold Badge of Global Quality Management from the Trade Leaders of Club and Editorial Office, Geneva, Switzerland. In 2010, our beloved CEO was awarded the Prominent Business Leader Award in the second Prominent Business Leadership Award in 2010. He was the honorary advisor to the Peace Society Worldwide, and the Global Civil Organization for Universal Peace and Harmony, and working for the promotion and inculcation of ideas, principles of world peace, harmony, tolerance, non-violence, international understanding and cooperation in the conjunction with the United Nations its various agencies. He received the Award of Excellence for the service to humanity by Peace Society Worldwide for his exceptional contribution to the society. The Award of Honoraria, degree of Academic Fellow with the rank of Professor, was given in France. The Medal of Brand Scientist was awarded to him in Pakistan by the Prime Minister of Pakistan, and on behalf of him, the country manager, Mr. Yusuf Rasai Jilani, received that award. In 2012, he was awarded in the 6th National International Conference on Ayurvedic and Complementary System of Medicine for his outstanding contribution in the field of health and wellness. In 2019, the most prestigious award, DATUK Award, was given to him for the year 2019. And in 2020, one more prestigious recognition was given to him, and he was appointed as a Goodwill Ambassador of IMSAN, that is the International Institution for the Government Use of Microalgae Spirulina Against Malnutrition for the next 10 years, that is from 2020 to 2030. The objective of this mission is to give spirulina to 1 million malnourished children. And at this juncture, I also recall that he started the $1 one child campaign, and this is welcome by the DXN family all over the world. So, with due respects and regards, on behalf of RVC, I welcome our beloved CEO, Dr. Lim Sujan, for this program. I also welcome Mr. K.M. Rafiq, our International Managing Director, who is currently administering 6 countries, including Afghanistan, Russia, India, Sri Lanka, and Mongolia, and Pakistan. So, we are very thankful to him for giving us the guidance. And to start with, I still remember he joined DXN as a executive officer, and through his sincere hard work, our beloved CEO has recognized his contribution and appointed him as one of the IMDs in the
DXN. So it's a great honor for all of us in India. And at this juncture, I also welcome my mentor and my guide, Professor Vasupalaya and Dr. Ratna, for whom I know them for more than 35 years, well before joining DXN. So I am a part of their family. So I am proud of that. And he started the business, DXN business in India, way back in 1999, and officially it was opened in 2000. And through his untiring efforts, now the DXN has gone to, his network has gone to so many countries, more than 200 countries. And 50% of the DXN network comes under him. That is because of his untiring efforts. I know how much of a stress and strain he has taken, hard work he has done to establish DXN worldwide, and ably supported by Dr. Ratna, a strong pillar for Professor and DXN India and DXN World. And I welcome both of them. Especially mentioning about Dr. Ratna, she closed her clinic because I have been a consultant for their hospital way back in late 80s. And she closed that hospital, 34-bedded hospital, and she has turned into a wellness entrepreneur along with the professor. And of course, talking about professor, he quit his job as a head of the Department of Economics and the vice principal post. So it's a lot of sacrifice which has gone into DXN, developing the DXN, and every the leaders responsible for this tremendous growth. And we are grateful and thankful to our respected CEO for guiding us. And also today, he has invested so much of money in India and helping India to grow, DXN India to grow. That's a DMI to grow. And wholeheartedly, I thank him on behalf of the RBC and on behalf of DXN India Network. And I welcome you, sir. Yes. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you for your kind introduction as one of the founders of DXN India. I know that without you, it would not have been possible, and your kind support. We now request Mr. Rafiq to give short update in Hindi about DXN India. Thank you, Professor. Thank you, Doctor. Good morning, Dr. Lim. Welcome to India. Welcome to the show, Professor and Doctor. So thank you very much for this opportunity, and thank you, Dr. Ranjan. So बहुत छोटा सा एक हिंदी में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और एक अपडेट में देना चाहता हूँ इंडिया के बारे में. इससे पहले I want to congratulate Professor and Dr. Ratna for their tremendous effort. 250 days मार्केट को कितना जिंदा रख सकते हैं उतना जिंदा रखा है उन्होंने. लॉकडाउन जो भी होगा, जितना प्रोग्राम नॉर्मल डेज में होता था उससे ज्यादा प्रोग्राम आज प्रोफेसर की वजह से पूरा इंडिया में 7 बजे तो टीवी सीरियल छोड़ के अभी लैपटॉप पर सामने बैठे हुए थे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश कर और ट्रेनिंग के बाद मैं भी एक प्रोग्राम पेश कर रहा था. उसके बाद डॉक्टर रत्ना ने एक पर्सनल काउंसलिंग भी कर रहे थे, एक अच्छा मोटिवेशन भी मिल रहा था. सो थैंक यू वेरी मच. ये टाइम में आपने आपका कंफर्ट नहीं देखा, फिर मार्केट के लिए इतना मेहनत कर आपका टीम और आपका आरबीसी पूरा आरबीसी टीम ने इतना मेहनत किया. तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर. थैंक यू. आज हम देखेंगे, आज हम डॉक्टर लिम का स्पीच सुन रहे थे मॉर्निंग में DSAM में. डॉक्टर लिम का स्पीच
बहुत एक जबरदस्त डॉक्टर लिम ने एक स्पीच दिया था। जो जितने भी कंट्रीज वहां पे थे, जितने भी कंट्रीज का, जितने भी कंपनीज का सीईओ वहां पे थे, उनका पूरा सोच हिला दिया डॉक्टर लिम ने। जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में वो लोग बोल रहे थे, और डॉक्टर लिम ने जो किमोनो वो पहन रहे थे और मैं पहनाओ जो किमोनो के बारे में बोल रहे थे। तो इट वॉज ए वेरी ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। अगर आपने वो शो मिस कर दिया, आप फिर भी यूट्यूब में जाकर दे सकते हैं, DSAM का वेबसाइट में वो शो अभी भी मौजूद है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक और फार्मर, ये किमोनो की तरफ से फार्मर को कैसे यूज करेंगे, ये जो किमोनो का जो ड्रेस है ना, ये जो ड्रेस है, ये एक ऑल इन ऑल ड्रेस है। ये जो हम फॉर्मल भी बोल सकते हैं, सेमी फॉर्मल भी बोल सकते हैं, कैजुअल भी बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। ऐसा एक ड्रेस डॉक्टर लिम ने आज DXN इंडिया को दिया है, वो है हमारा DXN का किमोनो। अगर आप ये DXN का किमोनो लेना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगा, नेक्स्ट एक वीक का अंदर नहीं लेना, एक वीक का बाद लेना। बिकॉज एक वीक का बाद डॉक्टर लिम ने अप्रूव किया है, जो बंदा 2 किमोनो लेगा उसे 1 किमोनो फ्री में मिलेगा। तो इसीलिए तो यू हैव टू वेट, आफ्टर दैट यू कैन सी। बहुत अच्छा एक प्रमोशन भी चल रहा है। और इसका साथ मैं थोड़ा अपडेट भी आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर लिम ने आज इनके इंडिया के लिए बहुत अच्छा अप्रूवल दिया हुआ है। नंबर 1 अप्रूवल डॉक्टर लिम ने दिया है, जो हमारा सिंगल हर्ब करने के लिए। सिंगल हर्ब का ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुका है। वेरी सून हमारा पास 5 सिंगल हर्ब हमको मिलने वाला है। बहुत नॉर्मल प्रोडक्ट, जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट, पूरे इंडिया को हिलाने वाला प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है हमको मिलने वाला है। इसके साथ साथ भाई जनवरी और फरवरी और मार्च का अंदर हमारा होम केयर प्रोडक्ट, जैसा हमारा कपड़ा धोने का और फ्लोर क्लीनर और हमारा डिश वॉश और हमारा ये तो और एक हैंड वॉश, ये 4 प्रोडक्ट और आपको फरवरी और मार्च में मिलने वाला है। तो थैंक यू डॉक्टर लिम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। DXN इंडिया के लिए इतना अप्रूवल उन्होंने दिया और इतना कुछ किया। और हमारा सिद्दीपेट के फैक्ट्री के बारे में डॉक्टर लिम आपको बताएंगे, तो उनकी जुबान से हम सुनेंगे। और ये भी मैं आपको जानकारी देने चाहता हूँ, जनवरी महीने में बहुत सारा प्रमोशन आने वाला है। जनवरी महीने में SV बढ़ने वाला है, जनवरी महीने में बोनस बढ़ने वाला है, और जनवरी महीने में थोड़ा सा DP भी बढ़ने का संभावना है और बढ़ने वाला है। तो आई थिंक पूरा इंडिया रेडी है। ये जो हमारा फ्यूचर 2021, 2000 बोल रहे थे, 2020 की वजह से, कोरोना की वजह से सेल डाउन हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। जो भी सेल डाउन हुआ है, DXN पूरा वर्ल्ड ने ये सेल को रिकवर कर लिया है। जो कोरोना का पहले जितना भी सेल था, उससे ज्यादा सेल लास्ट 2 महीने से DXN पूरा वर्ल्ड को आ चुका है, पूरा इंडिया को आ चुका है। लीडर का बोनस बढ़ चुका है, और 2021 को रिसीव करने के लिए पूरी तैयार से पूरा नेटवर्क रेडी है, और DXN मैनेजमेंट भी रेडी है। हर एक महीना नेटवर्क को सरप्राइज देने में, एक गिफ्ट सरप्राइज देने में और मार्केट को बढ़ाने के लिए, तो पूरा मैनेजमेंट भी रेडी है। तो इसके साथ और जितना भी अपडेट है, मैं और अपडेट आपको सामने लेकर आऊंगा और आपका साथ मिलता ही रहूंगा। आज क्या तक हम पूरा शो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डॉक्टर लिम साहब हमारा साथ है, उनका क्वेश्चन एंड आंसर और उनका मोटिवेशन का ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी सी यू सून। Yes. Thank you, Mr. Rafiq, for your update. And अभी तो बहुत खुशी का बात है, हमारा डॉक्टर लिम जिनके साथ हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होने वाला है। उसके पहले अभी आपको मालूम है, वो बहुत मेहनत करके हमने 250 दिन का सेलिब्रेशन कंटिन्यूसली हमने करना जो शुरू किया है, ये सभी आप लोगों से सहयोग से, आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है, DXN RVC लीडर्स ने, आपका सभी ये श्रम कुल मिलाकर हमारा ये जो ये हो गया है, हमारा ये कंटिन्यूस 2 सेशन चालू रखने में बहुत चैलेंज आ गया। ये बरसात का दिन में इंटरनेट का स्टेबिलिटी नहीं था ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट करने के लिए,
पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज, वहां से जो गांव से अचीवर्स आ गया सामने, वो चैलेंज के साथ हमने सभी तरह का चैलेंज ये ट्रेनिंग में हमने खुशी से ये चैलेंज को सामने किया। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था, ये समय में मार्केट को नॉट ओनली स्टेबल रखना, ऊपर लेकर जाना। ये खुशी का बात वो है, हमने मार्च से अभी दिसंबर तक, दिसंबर महीने में है, हमने कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट अप्रैल मई जून थोड़ा हमको टोटल लॉकडाउन से, टोटल प्रोडक्ट का सप्लाई में जो प्रॉब्लम, मूवमेंट में, प्रोडक्ट मूवमेंट में, कुरियर में जो प्रॉब्लम आ गया है, उसको छोड़कर हमने वेरी शार्प अपवर्ड जर्नी शुरू किया। जून जुलाई के बाद में कंसिस्टेंटली मूविंग अप। खुशी का बात वो है, ये पीरियड में, ये पैंडेमिक पीरियड में, ये लॉकडाउन पीरियड में, बिकॉज ऑफ हमारा कंटिन्यूस मोटिवेशन, सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड लोगों को एक्टिव रखने का कारण से 250 दिन में हमने वन बाय वन अपवर्ड गया। अपवर्ड जाकर अक्टूबर में हमने सारा रिकॉर्ड को तोड़कर प्री कोरोना का रिकॉर्ड जो हमने हासिल किया था, हाईएस्ट सेल्स इन डीएमआई, उसको तोड़कर उसके ऊपर गया। ये तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई एम श्योर 2021 को हमने बहुत बड़ा ग्रोथ डीएक्स इन इंडिया में देखने वाला है। वो डॉक्टर लिम सियोजिन के साथ बातचीत में हमको मालूम होंगे। थैंक यू रूपल, फंटास्टिक। अभी हमने हमारे प्यारे दातो डॉक्टर लिम सियोजिन ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद हमारे सामने है, लाइव टू इंडिया, पर्टिकुलरली इन आरवीसी चैनल को। आज 250 दिन का कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को ब्लेसिंग के लिए हमारे सामने हमारे प्यारे फाउंडर, सीईओ, हमारे सब कुछ हमारे सामने है। हमने आज इसके साथ डायरेक्टली बातचीत शुरू करेंगे। सर, वंस अगेन वेलकम टू यू। We are very excited to see you after a very long time of many months. Of course, directly in DXL RVC YouTube channel. It is fantastic. We are waiting for you to make some big, our growth. Then invite you. We are very happy that we have been consistently improving by your blessings. To start with you, sir. And of course, your book, My Journey with the DXN, many people would have read in India, but there are a lot of new people today we have invited to see this program, witness this program. They are all there. They may not be knowing our lot of new prospects. What is the, secret of success of DXN all over the globe? इसीलिए therefore I would like to request you to start with your early journey, because you have started your journey of DXN in 1993 in Malaysia, but before that your journey started in India in I think the late 70s, 66 to 70, and your IIT. I think we want you to know, people would like to know your early story of higher education in IIT Kharagpur, India. Yeah. So you want to talk about Kharagpur? First year in my life, Professor. Okay. Kharagpur started from late my 18th, stepping into 19. Until my year 23, So you see, for anybody
on the year 19 to 23 is the most precious year. Okay, but that time that we started to grow, to form our mentality, our approach to the world. Okay, to learn about the world. Okay, so these are the important times. So do we need a translation? No. Oh, at the end, only one gist he will do. You can continue. I continue to talk. Okay. Yes, So yes. two things, in IIT Kharagpur. So the one thing is, okay, I learned about engineering. Okay, engineering, and that IIT is one of the best institute in the world. Okay, not only in India, also in the world. So even outside India, many people know about IIT. Okay, best training. So this training is important to the extent, Yes. The extent is very structured, Okay, one world, one market, everything well structured. This basically is the engineering concept. So even the genotherapy, you put it into the law 1, law 2, law 2. This is engineering. So to marketing, to this thing, so these are the training from this thing. The second most important thing is that I have close proximity to India. Okay, so I'm meeting with the professor, with the Indian. I going to go to the villages, Even I go to the villages because I like to cycle, through the village. Because beside the IT at the back, there's a huge this plain, no mountain, So I can see the sunset, There's no sea. Until today, I cannot forget that. So when I am in Telangana, you see, Telangana also when it comes to the winter, it's very similar to Bengal, Okay, the sun can rain everything. So that I have this a close proximity to India. So until today, you see, my mentality, my very Indianized. Okay, so these are the two consequences. So first, we are well trained in engineering. Okay, to go to the world. Secondly, is that we have a close proximity to India. Then I understand India better. Okay, I can understand the people better. So now we go for the social economy, we go to expansion, and now we are going to make India the next HQ of the DXN. We are serious now. We are not only talking like this. So all this I can to the day of Kharagpur. Yeah. Fantastic. Thank you, sir. A brief translation by Mr. Rafiq. डॉक्टर लिम को ये उनका जो बचपन था जो इंडिया का था तो उनका जो शुरू कर रहे थे कब से शुरू किया और उसके बारे में शेयर करने के लिए बोला गया था। तो डॉक्टर लिम ने बोला था उनका जो 19 साल से 23 इयर्स तक उन्होंने लगभग 19 साल से 23 इयर्स तक ऑलमोस्ट एक 4-5 साल इंडिया में गुजरा था, खड़गपुर में जो कलकत्ता का पास है, जो वेस्ट बंगाल में है। ये जो 19 to 23 इयर्स है एक इंसान के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट ईयर होता है। तो डॉक्टर लिम बोल रहे हैं ये जो टाइम है ना, उनको दो चीज बहुत अच्छी तरह सीखने को मिला। नंबर 1 एक इंजीनियरिंग, आईआईटी जो खड़गपुर है वो इंडिया का नहीं सिर्फ पूरा दुनिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो एक अच्छा इंजीनियर को रेडी करता है। जो इंजीनियरिंग की कारण से उन्होंने डीएक्सन को सफल करने में बहुत आसान मिला था। जो डीएक्सन का 1 वर्ल्ड 1 कॉन्सेप्ट था या ज्ञानोथेरेपी का जो फॉर्मूला था, ये सब उन्होंने इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उसका जो टेक्निक है उसने उसको डीएक्सन का बिजनेस में डॉक्टर लिम ने अप्लाई किया। नंबर सेकंड चीज जो इंडिया ने उनको दिखा है, इंडिया का साथ एक बहुत नजदीक एक रिलेशनशिप ये जो 5-4 साल ने डॉक्टर लिम को दिया था, जिसकी कारण से इंडिया का ऊपर उनका लगन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ही वांट टू मेक, इसलिए डीएक्सन अभी इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। और फिर भी डॉक्टर लिम बोल रहे हैं नेक्स्ट हमारा एचक्यू है वो इंडिया ही होगा। इसलिए डॉक्टर लिम ने इतना इन्वेस्ट करके हमारा सिद्धिपेट, हमारा तेलंगाना में एक बड़ा फैक्ट्री भी किया है। तो फ्यूचर जो भी डीएक्सन में होगा वो इंडिया में ही होगा। ये है डॉक्टर लिम का कहना। थैंक यू डॉक्टर। Thank you very much. And now the second question for you, sir. Second question to you: why and how you diversified from civil engineering to holistic medicine? So I think you come back to IIT. I remember when I studied in IIT, the engineers do so many things. Some of them do the aeroplane model, some of them do sound system. They are very versatile. So we are trained to think outside the box, To think outside the box when we're trained in IIT. So, and for me,
I like this natural thing, like this natural healing, the herbs. I love herb very much, the natural food and everything. So it's a kind of going back to nature, going back to nature. That is inside my mind. So that actually, so when I diversified into the holistic medicine, okay, because I find that the life in engineer is not so fulfilling for me because I spend so much time study in IIT Kharagpur, but I do not even use 5% of what I've learned, So when we take, oh my goodness, take care of this construction, this thing, wow, there's a lot of problem in the side, there's a thing, so we are solving a day to day, there's a maintenance, there's a small problem, okay. So I am thinking, if I continue like that, I will be wasted, my life will be wasted. This is a small thing. And my professor, I think they'll strangle me, if they know that I am. They have high expectation on me, Okay, my professor, this thing. So I'm thinking many times. So I'm thinking that maybe I should not continue this career as an engineer. Okay, but I can continue in a holistic, this thing. But I am applying the concept of engineering. So in the sense that it's not completely cut off, from engineering. Okay, the way we structure the DXN, the way we construct the factory, the way we expand the DXN, you see, we are one of the very few. This one we can do aggressively on the factories, on setting out of this thing because of the engineering background. Okay, so that I may not practice as a civil engineer, but I continue to be an engineer. Yes. So even you see, like now the COVID, we go for this video, we study the video, this thing, recording everything. So it's almost like engineering. Okay, Yeah. we are continuing to study, we are going applying. Okay, so mainly, okay, there is maybe coming to a few reasons. First is I love this natural approach in life, natural approach, right? So we think that we should do something naturally. Okay, that is the thing. Secondly is that I continue to apply my engineering approach so that I feel that maybe I can upgrade myself better, or rather than you go to construction site, every day quarrel with the contractors, at the end of quarrel, this is a thing. Then after that, new contract come out, the same problem come out again. Are we going to my whole life? No, sorry, I'm not going to end my whole life. Then come to the MLM. When I studied MLM, I said, wow, this MLM is a beautiful thing, can make it free. Okay, so I myself is an example how MLM can make us into a free person. Okay, so that I go to all the members, do not worry about what you are at this moment. Okay, when you join the extent, okay, even today you become free and you become anyone you want. Yeah, Professor. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Rafiq. डॉक्टर लिम से ये सवाल पूछा गया था, उनका पढ़ाई तो इंजीनियरिंग में हुआ था, खड़गपुर में इंजीनियरिंग पढ़े थे, बट अभी वो आप होलिस्टिक मेडिसिन में ये हर्ब्स का दुनिया में वो कैसे आए थे? डॉक्टर लिम का कहना यह था, जब वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उनको ये सिखा गया था थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो नॉर्मल जो सोच रहे थे वो सोच का बाहर सोचना चाहिए। ये सोच उनका अंदर चला गया, और जो भी वो देखते हैं उसकी बाहर ही सोचना शुरू कर दिया डॉक्टर लिम ने। और फिर उनको ये जो नेचर है, ये जो फूड है, ये हर्ब्स है, इसका ऊपर एक बहुत बड़ा लगान शुरू से ही था, उनका बचपन से ही ये हर्ब का ऊपर उनको एक लगन था। और डॉक्टर का कहना ये है इंजीनियरिंग लाइफ जो है इतना इजी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर से मिलना ये करना इतना इजी नहीं था। तो वो सोच रहे थे अगर मैं इंजीनियरिंग का तरफ चल जाऊंगा उनका लाइफ उतना आसान नहीं होने वाला है। बट इंजीनियरिंग का जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट, अभी डीएक्सन जब शुरू हुआ था पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने डीएक्सन का ऊपर अप्लाई किया है। तो डॉक्टर लिम का कहना यह है वो इंजीनियरिंग को पूरा कट ऑफ नहीं किया है, इंजीनियरिंग को उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, बट डीएक्सन ये हर्ब्स वर्ल्ड में आने के बाद, ये जड़ी बूटी ये हमारा होलिस्टिक मेडिसिन में आने के बाद, डीएक्सन शुरू करने के बाद इंजीनियरिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट था उनको बहुत अच्छा एक मदद मिला डीएक्सन को एक्सपैंड करने में, जो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रखकर। तो डॉक्टर का ये कहना है ये वो उन्होंने इंजीनियरिंग को शिफ्ट करने का मेन कारण है इनका नेचुरल अप्रोच था, जो नेचर का साथ उनका लगन था नंबर 1, और अपग्रेड उनका लाइफ को अपग्रेड करने में, बिकॉज इंजीनियरिंग का
उनको उतना पसंद नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाना, उनका साथ झगड़ा करना और नया कॉन्ट्रैक्ट लेना। वो सोच रहे थे मैं कैसे अपग्रेड करूं, इसलिए उन्होंने एमएलएम सोचा था। तो डॉक्टर लिम ने ये भी कहा है, वो एक लाइव एग्जाम्पल है, एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने एक आदमी को, एक इंसान को एक सक्सेसफुल रास्ता कैसा बता सकता है। तो डॉक्टर लिम इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। तो डॉक्टर लिम से हम सबको सीखना चाहिए, जो एक हटकर सोचकर बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज ऑफ दिस एमएलएम एक इंसान का लाइफ कैसा बदल सकता है। थैंक यू डॉक्टर। Yeah. Yes, Professor. Yes. Next question to you, sir. It is next to you. What is the secret of very fast growth of DXN to be the 15th rank amongst the top 100 direct selling companies in the world in just 25 years? Your story of struggle, sir. So today we are going to have a $1 million secret. $1 million secret. There's no secret, no. There's only one thing. DXN, okay, we always learn from a failure. Okay, actually, I document the whole thing into my talks, no, in the Facebook. So I think those who are interested actually can go to the Facebook, my Facebook, no, DXN, Dr. Lim Xiaoqin, to go there and check all the video. So basically, Professor, basically it's like this. The world is not perfect, okay? So they are full of struggle, okay? But every crisis is an opportunity. We believe that, okay? The crisis is an opportunity. Today is a COVID, okay? COVID is a crisis, but because of that, DXN, you know, because many of our competitors, they're stunned. Many of them, they're making noise. They're no more making noise, no, but they are badly hit by the COVID. They're running and kicking. So there's no secret. The only thing is that we are able to reset ourselves. Okay, reset our mind. We practice sunya, promise sunya, everything we reset our mind. So when we do a thing, sometimes it's successful, sometimes it's fail. So when it is fail, okay, we analyze again, we try again, and again. Okay, there's no secret, no, there's no secret. Okay, so Professor, so we just hold on to it long enough. DXN, when you hold on the system long enough, you will be successful. As simple as that, this thing. So Professor, I think you agree with me. Okay, Yes, the only thing is that we have to hold to it, no let go. Okay, don't look to the left, don't look to the right. Hold on it. One day you wake up, a millionaire, so you wake up, we become the top ranked company in the world. As simple as that, Professor. Thank you, sir. Thank you, sir. You are right. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर से ये सवाल पूछा गया था, डीएक्सन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है 25 साल में, जो दुनिया का 15 बड़ा कंपनी बन गया है, इसका राज क्या है? डॉक्टर ने बोला था उन्होंने आज $1 मिलियन सीक्रेट हमसे शेयर करने वाला है। वो सीक्रेट है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। डीएक्सन सक्सेस के लिए कोई भी सीक्रेट नहीं है। डीएक्सन ने कैसा स्ट्रगल किया और कैसा हर एक मुकाबला को फेस कर बाहर आया। डॉक्टर लिम का एक सीरीज चल रहा है फेसबुक में, आप देख सकते हैं। डॉक्टर लिम xiaoqin का एक फेसबुक है, वो फेसबुक से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर लिम का कहना यह है, हर एक क्राइसिस, हर एक चुनौती और हर एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। लाइक हमारा कोविड जो है, ये एक चुनौती लेकर आया। इसे हम कैसे सामना करेंगे और इसे हम कैसे मुकाबला करेंगे। डीएक्सन का सफर में हर एक बार डॉक्टर लिम को ये जो परेशानी आई थी, हर एक चैलेंज आया था, हर एक कंट्री में जो भी चैलेंज आया था, डॉक्टर लिम का कहना यह है कि रीसेट योरसेल्फ। जो सुनिया का जो मेडिटेशन उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उसने उनको बहुत मदद किया है उनको अगेन रीसेट करने में। समटाइम्स डॉक्टर लिम का यही कहना है, हम एक काम करेंगे, कभी कभी ये सक्सेस मिलता है, कभी कभी ये फेलियर मिलता है। डीएक्सन में ऐसा नहीं है। डॉक्टर लिम ने जो किया तो भी सक्सेसफुल हो गया। इसमें डॉक्टर लिम ने फेलियर भी देखा। जब वो फेल हो जाते हैं, एक ही रास्ता है वो फेलियर से बाहर उबल कर आने का, वो है और एक बार ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो। बार बार ट्राई करने में जो भी फेलियर है वो सक्सेस से हम चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर लिम का यही कहना है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, जैसा डीएक्सन सक्सेस है, अगर ऐसा आप भी डीएक्सन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, होल्ड टू डीएक्सन फॉरएवर। जो डीएक्सन है उसे उसका साथ लगे ही रहना, सिर्फ अगर ये काम भी आप करेंगे ना, आप डीएक्सन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक ही फोकस का साथ, इधर उधर नहीं देखना, नो लेफ्ट और नो राइट, जस्ट फोकस करना डीएक्सन का ऊपर
और यही है सीक्रेट डीएक्शन का, और ज्यादा सीक्रेट नहीं है। जो प्रोफेसर ने आज सक्सेस हुए हैं उनका कारण भी यही है। जितना भी क्राउन एम्बेसडर दुनिया में है सबका कारण ये सीक्रेट है, सीक्रेटिंग नहीं है। काम करते रहना, सक्सेस आता ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू प्रोफेसर। Thank you. Sir, we would like to know, because we have already crossed 27 years, 28th year now, and where we will be in the next 10 years. You are the right person because you have seen the struggle of growth, and how do you predict next 10 years? Professor, no need to predict, we always say, look at the past, we will know the future. Yes. Okay, for the 27 years, is one thing, every 3 years, DXN double the size. Every 3 years, we double the size. So from now on, we are 100 over time larger than this thing now. Okay, so now in the next 10 years, there will be three cycle. Okay, so that means we are going to be 8 times larger than today. Just imagine now, whatever we have today, you multiply by 8. So Professor, you must multiply your bonus by 8, this thing. So this is what we're going to expect for the next this thing. So we are going okay, so we're going to the food industry, okay, we're going to the lifestyle industry, we're going to this thing to expand in the horizon of the DXN. So we are continue to progress. We are continue to progress. Okay, so that every 3 years we are going to double this DXN. So in the next 10 years, okay, we are going to increase 8 times of the present. Fantastic, sir. Have been happened for the past 27 years. So we hope that the whole momentum will continue. Yeah, Professor. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर से थर्ड सवाल ये पूछा गया था, डीएक्शन अभी 10 साल का बाद कहाँ रहेगा? 10 साल में आप डीएक्शन को कहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर लिम बोल रहे थे इसमें प्रेडिक्शन का कुछ नहीं है। डीएक्शन में अगर आप पास्ट देखेंगे, जो उसका अतीत देखेंगे, उसका फ्यूचर कैसा है आपको पता चल जाएगा। डीएक्शन जितने भी हम देखेंगे, जब 25 साल से जब डीएक्शन शुरू हुआ था, हर 3 साल में डीएक्शन ने उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका सेल्स है, उसने डबल किया है। ये है डीएक्शन का जो पूरा स्ट्रेटेजी है, ये पूरा रिकॉर्ड यही बता रहा है। हर 3 साल में डीएक्शन ने उसका सेल्स को डबल किया, उसका कंट्री ओपनिंग को डबल किया। तो अगले 10 साल में अभी जो डीएक्शन है, इससे 8 गुना 8 टाइम्स बहुत बड़ा रहेगा अगले 10 साल में। अगर आपका बोनस जो भी आज का बोनस है, इससे 8 गुना ज्यादा बोनस होने वाला है अगले 10 साल में। अगले 10 साल में डीएक्शन पूरा फूड इंडस्ट्री में जाने वाला है। अगले 10 साल में डीएक्शन पूरा लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में जाने वाला है, और हर एक 3 साल में डीएक्शन डबल होने वाला है। और आप सोच सकते हैं इन 10 ईयर्स अभी जो डीएक्शन है, अभी आपका बोनस है, अभी प्रोफेसर का बोनस है, और 8 गुण बढ़ सकता है और बढ़ेगा। तैयारी कर रहा है। तो थैंक यू डॉक्टर। Thank you very much, sir. How another important question which people would like to know, how our products are superior, particularly Ganoderma spirulina, because our basic product, with the reference to research and our technology, because we know that, sir, last 20 years our experience, personal experience, by taking your products, we have been seeing immense health benefit and tremendous testimonial, and no other Ganoderma has given that result. What is the secret? As you see, Professor, okay, our products are superior. Okay, one of the reasons is that we are the scientists now. We are technocrat. Okay, so you see, when I having my video in the Facebook, many people comment to me, I am the only CEO, okay, making video and explain everything in the Facebook, okay. Most of the CEO that behind the scene, that enjoy their life, they go for the years, we are sitting in front of video, keep on focusing, explaining the thing, to a member. Because first thing first, we are scientists and technocrat. This. So we are proud to be, I think, first thing first, we are the technocrat. Okay. So when we do the study, no, the second reason is that we never stop the research.
We keep on doing the research. Keep on research. I give you one example. Yeah. Thank you. Yeah. Very much. Yeah. So I'm this spirulina as an example. Okay, spirulina. Okay, so that we are technocrat. Okay, so I give an example about spirulina. Okay, many years ago we started the spirulina, and we keep on doing the research. No? Keep on the research. Keep on listening. So that now our spirulina becomes super strong. No? Okay. When we send our spirulina to India, okay, it can stand the heat of summer, 45 degrees, 50 degrees, survive. No. Then we send to this China. Okay, and suddenly the China, the bottom part of the weather is coming out soon, it still survive. Okay, this is the proof of the quality because our spirulina become versatile. So the same thing with our Ganoderma. Ganoderma is a tropical this mushroom. No, so now we can acclimatize it to temperate. Okay, to the cold climate, to the hot climate, super hot climate. Okay, these are the thing. Then now we come to India. We even bring in a noni. Okay, so now we teach the farmer. But they plant our noni in a matter of 9 months. Okay, they already started to get fruiting. You know, this technology, this quality. Okay, then after that we established this lab, the lab for this what we call 17025. 17025 is a good qualification of the labs, okay, so that we can test the quality international standard using international standard. Now, at the end of the day, the superiority of the products cannot be self-claimed. Okay, everybody can. So that DXN is the most accredited one. First, we have 3 ISO. Okay, ISO 2001, ISO 1001 is for the environment and organic. Okay, ISO 17025, and we have all this. We have 6 GMP. Okay, then we have the TGA from Australia. Okay, this thing. Then we have the HACCP. Okay, we have all the halal certificate for clean food. You name it, we have it. You know, so we are the most certified company among all the MLM, and that also goes to the superiority of our products. Okay, so let me make summary now. Okay, first, our product is good because we are scientific technocrat. Okay, secondly is that we never stop R&D until today, so our products still improving day to day. You know, this thing. And thirdly, we are the most accredited this company. You know, and Yes. Yes, thank you, doctor. Thank you, sir. डॉक्टर से ये सवाल पूछा गया था, डीएक्सन का प्रोडक्ट सुपीरियर, अब दूसरे कंपनी से या दूसरे प्रोडक्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे, डीएक्सन का प्रोडक्ट इतना सुपीरियर कैसा है? तो डॉक्टर का सवाल जवाब ये है, डीएक्सन का प्रोडक्ट डेफिनेटली सुपीरियर है. इसका मेन कारण है बिकॉज वी आर साइंटिस्ट. जो डीएक्सन जो डॉक्टर है वो एक साइंटिस्ट है और एक टेक्नोक्रेट है. और ये जो डीएक्सन हम कैसा उगाते हैं, ये कैसा करते हैं, ये इसका रिसर्च कंटिन्यूसली चलता रहता है और रिसर्च को कभी भी डीएक्सन स्टॉप नहीं किया. इसीलिए अगर हम देखेंगे जो डीएक्सन का फॉर एग्जांपल डॉक्टर लिम ने दिया था स्पाइरुलिना का, जो स्पाइरुलिना का हर वक्त ये रिसर्च चलता ही रहता है. जिसके कारण से अगर हम देखेंगे जो स्पाइरुलिना का जो हमारा जो स्पाइरुलिना का जो ये है, अगर इंडिया में वो उगाते हैं, इंडिया में भी स्पाइरुलिना आता है. इतना गर्मी में भी वो स्पाइरुलिना सक्सेसफुली ग्रो होता है. यही स्पाइरुलिना चाइना में चला जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा विंटर है, वहां पे भी ये स्पाइरुलिना सर्वाइव करता है, वहां पे भी सक्सेसफुली ये स्पाइरुलिना चले आता है. सिर्फ स्पाइरुलिना नहीं है, गैनोडर्मा भी ऐसा ही है. एनी क्लाइमेट में ये हमारा गैनोडर्मा है, ये सर्वाइव कर सकता है. सेम गोज टू द नोनी. नोनी हमारा जो नोनी है, नोनी भी अभी हम देखेंगे बिकॉज ऑफ हमारा R&D की वजह से सिर्फ 9 मंथ में जो हमने फार्मर को दिया है, जो तेलंगाना में जो हमारा फार्मर है उनको हमने नोनी दिया है, सिर्फ 9 महीने में उसने जो फ्रूट बियरिंग शुरू देता है. डॉक्टर लिम का कहना यह है जो क्वालिटी है, कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी ये हम क्लेम नहीं कर सकते, इसे सर्टिफाई करना है. तो डीएक्सन ऐसा एक कंपनी है, दुनिया से बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन डीएक्सन का साथ है. डीएक्सन का साथ है 3 ISO है, डीएक्सन का साथ 6 GMP है और डीएक्सन का साथ TGA सर्टिफिकेट है. और कंपेयरिंग एनी MLM कंट्री जो दुनिया में अगर हम देखेंगे, डीएक्सन की प्रोडक्ट इसीलिए सुपीरियर है. नंबर 1
हम खुद का एक साइंटिस्ट है और कंटिन्यूस R&D हमको चलता है। और थर्ड थिंग इज ये बोथ अक्रेडिटेड और बोथ सर्टिफाइड प्रोडक्ट दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कंट्री डीएक्सन में जहां पे काम करता है, डीएक्सन का प्रोडक्ट को अंगीकार दिया हुआ है, डीएक्सन प्रोडक्ट को ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसलिए डीएक्सन का प्रोडक्ट दूसरे कंपेयर करने में बहुत सुपीरियर है। या थैंक यू डॉक्टर। क्या प्रोफेसर? Yes. Our next question to you, sir. What attracted you? What attracted you? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಮಾಡಬೇಡ. Yes. What attracted you to invest huge amount of money, around 250 crores in first phase at Siddipet, Telangana, on an ultra modern factory in India? Yeah. So actually, Professor, this is also a good question. Okay, now only one answer, no? Because we want to make India the next HQ of the extent. India become next year of the extent. Okay, so that this is no more than 250 crores, Professor. Now we already spent 150 crores. We're going to spend 300 crores again in India, no? Okay, to make India technically 2 HQ for the extent. One is a HQ for the extent, another one HQ for the Sunya. So our Sunya International Foundation also in India. So that now we are going to bet on India, no? We're going to bet on India. So India will be the next happening thing for the extent. Okay, India will become the next HQ of the extent. Okay, so that is the why we put everything into Siddipet. I think that is the best answer I can give to you. Yeah. तो डॉक्टर लिम का ये सवाल पूछा गया था, डॉक्टर लिम को क्या आकर्षित किया है ये हमारा सिद्दीपेट में इन्वेस्ट करने के लिए? जो 250 करोड़ जो पहला फेज में 250 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है, डॉक्टर लिम ने क्या अट्रैक्ट किया है यहाँ पे इन्वेस्ट करने में? डॉक्टर लिम का एक ही आंसर है, डीएक्सन इंडिया नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स बनने वाला है। जो डीएक्सन इंडिया है वही नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स बनने वाला है पूरा दुनिया के लिए। इसीलिए डॉक्टर लिम ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और इसीलिए डॉक्टर लिम ने इंडिया के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक हेडक्वार्टर नहीं बनेगा, इंडिया 2 हेडक्वार्टर बनेगा। एक डीएक्सन के लिए इंडिया हेडक्वार्टर बनेगा और सेकेंड सुनियत फाउंडेशन के लिए भी डीएक्सन हेडक्वार्टर बनने वाला है। बहुत बड़ा एक अच्छी बात है, पूरा इंडिया के लिए है और पूरा दुनिया के लिए है। और डीएक्सन 2 चीज का हेडक्वार्टर बनने वाला है। और यहाँ पे ही डॉक्टर लिम ने एक फाउंडेशन शुरू किया है जो सुनियती इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो इंडिया में ही है। तो पूरा जो भी हो रहा है, जो डॉक्टर लिम की जुबान है, नेक्स्ट हैपनिंग थिंग, जो भी फ्यूचर में धमाका बचेगा वो इंडिया में ही बचने वाला है। तो इसीलिए डॉक्टर लिम इंडिया से इतना प्यार करते हैं और इंडिया का ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडिया को ही फोकस करना चाहते हैं। So thank you, doctor. Thank you for your love and affection to India. Thank you, sir. Another question to you, sir. When this sophisticated factory, 3 times bigger than Malaysia, will be in full commercial operation? Yeah, actually, Professor, by right, it should be operated now. By right. But because of the COVID, the whole thing has been delayed for so many months now. Some we tell the contractor, whether COVID or no COVID, you better complete it on time. Okay, so hopefully that by next year, by next year, something around, I think, hopefully by March, we should be full this thing. It depends very much on the COVID, Professor. It depends very much on the COVID. Okay, it affects a lot because the workers not enough, everything not enough. Okay, and now we also started to training the basic group of we already get in so many group, the group of the mushroom, the spirulina, the noni fermentation. We also give a lot of noni fruits for the farmer to plant, and recently they also harvested the roselle and everything, so that hopefully by March next year we can be in full operation. Okay, very Professor. Good. Very good. Fantastic. Because तो अगला सवाल डॉक्टर को किया गया है, हमारा ये इतना बड़ा फैक्ट्री जो मलेशिया जो फैक्ट्री है उससे 3 गुण बहुत ज्यादा फैक्ट्री हमारा इंडिया सिद्दीपेट में है, वो कब शुरू करने वाला है?
तो डॉक्टर लिम का कहना है एक्चुअली ये ऑलरेडी शुरू हो चुकना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ ये कोविड, बिकॉज ऑफ ये कोरोना वायरस की वजह से ये आज देरी हुआ है। बट डॉक्टर लिम का बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है वहां पे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है जितना जल्दी हो सके पूरा कंप्लीट करने के लिए, और डॉक्टर लिम का कहना है बाय मार्च और अप्रैल तक ये पूरा कंप्लीशन होने का संभावना है, हमारा फैक्ट्री पूरा शुरू होने का संभावना है, और आगे ये कोविड का जो सिचुएशन है उसका ऊपर डिपेंड कर सकता है। बट इसका साथ साथ डॉक्टर लिम बोल रहे थे हम बेसिक हमारा जो होमवर्क है वो ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया छोटे छोटे ग्रुप को, और हमारा जो स्पाइरुलिना कल्टीवेशन ग्रुप है, हमारा मशरूम का कल्टीवेशन ग्रुप है, और हमारा नोनी का कल्टीवेशन ग्रुप है, ये ऑलरेडी उनका काम शुरू कर दिया है जो पैरेलली चल रहा है। जब फैक्ट्री शुरू हो जाएगा ये इसका साथ अटैच होकर हम बहुत जल्दी से आपको प्रोडक्शन देने वाला है। तो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर द न्यूज। Thank you, sir, for your very good news. Because we were thinking it will be delayed. We know the problem what is taking place because of the COVID. But by March means it is really we are excited because it is very another few months to reach. Yeah, yeah. And one more question, sir. As you know that India is a huge country. It is a continent, not a country, for more than 1.35 billion people. And what are your future plans for providing varieties of products to India? Yeah. So, Professor, it is a very good question. Now, in Malaysia, we have developed more than 200 products, no? Yes. By using Renama, and India hardly producing 20% of that, no? Yes, So, the 40%, we are going to actually we're going to diversify the product. Whatever Malaysia is producing, we're going to produce in India. First thing first. Okay. Yeah. Secondly, we are going into the Ayurvedic also. India are very famous for Ayurveda, so we go for the natural herbs. Okay, this is the thing. Third thing is that India also is a major producer of various type of food, even like say millet, no. There's rainbow of millet, no. Okay, from white color, from red, from blue, from this green, from to the pitch black. You have all the color. So that we're going to food. No. So you remember, Professor? Now Yes. the extent we're doing well in coffee. Yes. For the whole world, we say, cheers, drink coffee so you can become millionaire. So right in future, in India, throughout the whole world, we say, cheers, taking your meal so you can become a millionaire. Every day, breakfast, this thing, remember, taking your breakfast, taking your lunch, taking your this thing, you can become a millionaire. So in Malaysia, we are also producing a spirulina noodles, okay, Geronima noodles, cookies and all these things. These are the second range of product. We are going to food. Third thing is that, okay, so after the MCO, people started to traveling, okay, so we have a lifestyle package for DXN, so you can join the lifestyle package. So Professor, next time you bring Dr. Ratnam to come to Malaysia to spend a holiday, you become a super millionaire. Okay, so it's a beautiful concept. So these are the future development for our products for DXN, Professor. Yeah. So thank you, doctor. तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर से, जो डीएक्सन का फ्यूचर प्लान क्या है जो नया प्रोडक्ट ले आने के लिए। तो डॉक्टर जिनका कहना यह है, मलेशिया में अभी हमारे पास 200 तरह के प्रोडक्ट है, और इंडिया में भी हम जितने भी प्रोडक्ट मलेशिया में है सब प्रोडक्ट हम इंडिया में भी ले आने वाले हैं। जब हमारा फैक्ट्री शुरू होने वाला है, यहाँ पे हम पूरा प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। और ये आयुर्वेदिक, इंडिया आयुर्वेदिकली एक कैपिटल है, इसलिए इंडिया में हम बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर आएंगे। और वेरियस फूड, हमारा हर दिन का जो खाना है, जो हमारा मिलेट है, जो हमारा अनाज है, वो भी डीएक्सन में आपको बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम फिलीपींस में बोल रहे थे कॉफी पियो और मिलियर बनो, और इंडिया में फ्यूचर में बोले खाना खाओ और मिलियर बन जाओ। हर एक तरह की खाना, हर एक तरह की मिलेट और इलेक्ट्रिक की दान डीएक्सन में इन फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। जैसा डीएक्सन में अभी ऑलरेडी स्पाइरुलिना नूडल्स है, गैनोडर्मा नूडल्स है, ये सब नूडल्स, ये जो खाना है ऑलरेडी मलेशिया में शुरू हो चुका है। जो डीएक्सन मेंबर सिर्फ खाना खाते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको मिलियर बनाता है। वैसे ही इंडिया में भी हम ये नॉर्मल फूड को भी डीएक्सन का सिस्टम का अंदर लेकर आएंगे, जो हर दिन खाने में आप भी मिलियनर बन सकते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर ने बोला थे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। अब जो जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जब ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगा, आप मलेशिया विजिट कर सकते हैं, जहां भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे स्टे कर सकते हैं।
स्टे करने के लिए भी आपको बोनस दिया जाएगा, स्टे करने के लिए भी आपको वहां से आप टीम डेवलप कर सकते हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी डीएक्सन का अंदर बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सब मिलकर इंडिया और पूरा डीएक्सन वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ का प्रोडक्ट पाने के लिए तैयार हो रहा है। तो थैंक यू डॉक्टर, प्रोफेसर। Next question, Dr. Ratna will ask you, sir. DXN, good morning, doctor. Good morning, morning. Only 3 questions, 3 different directions. How to promote some information our members want. First is first question is regarding corporate social responsibility, CSR. So, can you throw some light on corporate social responsibility and charitable work undertaken by DXN company with organizations like IMSAM and others earlier also? Yeah. Thank you. Welcome. Okay. So now, you see, in MLM, we always say that this is the industry of people, from the people and to the people. Okay. So that we are people industry. Today in my what you call international this direct selling conference, I said that we are the industry on the people. Okay. So when we are the people, okay, there are 2 group of people. One are people, normal people like us, everything. But they are still a group of people, you know. They are at the disadvantage. So if we do not go and help them, who is going to help them? We will help them. Okay, we are help them. It's a thing. So if I wear a kimono, this kimono is not for fun. We are people now. Okay, wear the cotton dress. Okay, to help the cotton farmer, because the cotton farmer in DXN are highest on the suicide rate. You know. Okay, too young to die. You know, too young to die. These are the thing. So that our social responsibility is part of our MLM. It's a blood inside our blood, you know. Actually, DXN all the while from the very first day we are doing it until today. But DXN we are a low-profile company, you know. We give them the dialysis machine. We buy the insurance. We buy this ambulance. We even buy this fire brigades. We do so many things for the past many years now. But we never promote it in a social media. Then people coming to me and say, Dr. Lim, people cannot read your mind, you know. Whatever you do, you also let people know, no, this is a thing. Then after that, the income come to us, and then we have a high profile, hit the gong, okay, sign the ceremony, everybody is doing, okay, this thing. So I feel now it's time, Professor, for us to open the cut for the social economy. We have been doing it all the while. In Pakistan, okay, for the night blindness, in India, for the malnutrition, we've been doing it many Yes. So now we institutionalize it. We make it in a formal approach and we declare to the world. Then we involve all the members participate in $1 for one child. Yes. Remember, until today, okay, there's so many child still go to bed empty stomach, you know. Yes. Tens of millions of them, you know. We are feeling very sad about that. These are the things. So we feel that we are the MLM people. Okay, we are the industry of the people. Okay, so those people, they are at a disadvantage, everything. It is our duty, you know. Yes. It is our duty to help them, you know. We do not need people to this thing. So I think, and we get the overwhelming, you know. We get overwhelming, the 100,000 people actually joining us for this, what they call, $1 for one child is a thing. So very soon, hopefully, so we can go for our target of 1 million child. This every month we're going to help them. But 1 million, Professor, is still a chicken feed, you know. Yes. It's still a chicken feed. Yeah. It's Pakistan alone. Not to say malnutrition now. The night alone is 6 million now. And it's tens of millions in India, no. That's 9 by no. Okay. So the thing. And also you see for this for the woman, okay, half of them are suffering from anemia. What they call okay, this is also due to malnutrition. Okay, so now we have a long journey to go. 1 million, Professor and Dr. 1 million is just the beginning, no? Yes. Just the beginning. We're going to do more. Okay. Yes. Thank you, Doctor.
डॉक्टर रत्ना ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डीएक्शन का जो दान करता है उसका कहाँ कैसा करता है, इसके बारे में डॉक्टर रत्ना ने डॉक्टर लिम को पूछा है। डॉक्टर लिम का बहुत अच्छा जवाब था। डॉक्टर लिम बोल रहे थे एमएलएम जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस में अगर हम देखेंगे पूरा दुनिया में अगर हम देखेंगे दो तरह के लोग हैं। एक है नॉर्मल लोग, जैसा हम जैसे लोग हैं, एक नॉर्मल लोग रहते हैं, और एक तरह के लोग हैं जो डिसएडवांटेज, उनका पास सब कुछ नहीं होता है, जो हमारा पास है वो उनका पास नहीं है। ऐसे लोगों को हेल्प करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो इसीलिए डॉक्टर लिम ने बोल रहे थे, इसीलिए तो ये जो कॉटन ड्रेस डॉक्टर लिम ने अभी पहन रहे थे, जो किमोनो पहन रहे थे, ऐसी मजाक में नहीं पहना है। ये किमोनो पहनने की वजह से वो कुछ कॉटन फार्मर को हेल्प करते हैं उनका प्रोडक्ट यूज करने में। तो हर एक मुंह अभी डीएक्शन रख रहा है, ये लोगों को मदद करने की वजह से, लोगों को कैसा हेल्प करे जिसकी ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ही जा रहा है। डीएक्शन शुरुआत से ही ये जो दान करने का, हेल्प करने का काम कर रहा है। डीएक्शन ने इतना एम्बुलेंस दिया, डीएक्शन ने इतना फायर ब्रिगेड दिया, बट ये डीएक्शन का एक खासियत है, डीएक्शन ने बहुत शोर नहीं मचाया जो डीएक्शन ने दिया था, एक तो किसी को उतना पता नहीं है। बट अभी लोग बोल चुके हैं, डॉक्टर लिम आप जो भी दे रहे हैं थोड़ा दुनिया को भी बताओ। इसीलिए इमसान ने अभी डीएक्शन का साथ मिलकर 1 मिलियन चाइल्ड, और डॉक्टर ने ये एक फैसला लिया है, 1 मिलियन चाइल्ड, दैट मीन 10 लाख जो चाइल्ड है जो खाने विदाउट खाना नहीं तो वो बिस्तर में जाते हैं, हर दिन उनको खाना नहीं मिलता है, वो लोगों को एटलीस्ट एक 10 लाख बच्चे को खाने देने का, एक अच्छा खाना, एक स्पाइरुलिना उन तक पहुंचाने का काम डीएक्शन ने आज शुरू किया है। तो डॉक्टर लिम का कहना यह है, एज ए एमएलएम नेटवर्कर, एज ए एमएलएम पीपल, वी आर द पीपल, जो हमारा पास है, बट करोड़ों लोग हैं उनका पास कुछ भी नहीं है, पर ये हमारा जिम्मेदारी बनता है उनका साथ जाना, उनका तक जाना और उनको भी हेल्प करना। और डीएक्शन एक जरिया बन चुका है उनके तक पहुंचाने का। ये 10 लाख लोग, ये 1 मिलियन लोग अभी शुरुआत है, ये बहुत आगे जाने चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान में अगर देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, एनीमिक देखेंगे, नाइट लाइनर्स देखेंगे, करोड़ों का लोग इसका मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो डीएक्शन का पहला एक स्टेप है 1 मिलियन चाइल्ड कवर करना, और इससे डीएक्शन का एक सफर शुरू होता है। तो थैंक यू डॉक्टर लिम फॉर योर वंडरफुल नोबल विजन, एंड ओवर टू योर प्रोफेसर। Thank you. Second question, can you throw some light on Shunya International Foundation's objectives and goals? Because it is a new concept, many people don't know. While promoting that, members should be educated about this. Actually, Dr. Sunya actually is not new to DXN, you know. Yeah. Okay, the whole DXN is built on the concept of Sunya. Okay, non-differentiation. Okay, so Sunya, you see, in India, we are one of the very few, all people from all the background, okay, from all the background, from all beliefs, we can sit together, okay, and wear the same dress, sit together at this thing. You remember, beginning of the year, February, we have a 5,000 people in Bugaya, okay, and Bugaya is a Buddhist center, but the organizer is Feroz, okay, it's a Muslim people coming in, So that Sunya is important in the sense that it can like DXN, unify all the people. You see, DXN, we say that you shall not differentiate. That is the concept of Sunya. So now, DXN is treating the body. But the body and mind cannot be separated, So now DXN, we already upgrade to a level, okay? We wanted to manage the mind, okay? So it's a natural development for DXN. So Sunya, definitely for the mind, this thing, and we educate to the world. Free of charge, we don't charge anything. Secondly, is for the social responsibility. We need a non-profit organization, okay, to put forward. And now many people, because of SIF, they are not DXN member, they give donation, they give donation, they're happy with the $1 for one child. Even in India, many people, they started to coming in. So actually, like we have our member in Kerala, Pradeep, he's telling me, so many people, joining us, because of Sunya. So that Sunya will open up a new chapter for DXN, okay? And it is not totally new. We have DXN. We have been operating based on the concept of Sunya for so long. So the Sunya International Foundation will be a natural, okay, extension from what we are doing now, okay? So that mind and body will be trained, okay? Then we go for social economy also. Okay, Professor? Yeah, thank you, Doctor.
So, I hope the Ratna, line is okay. Okay, yeah. Yeah. रत्ना ने और एक सवाल पूछा था, जो सुनियति जो SIF है, सुनियति इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जो डॉक्टर लिम ने किया है इंडिया में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका गोल क्या है? तो डॉक्टर लिम का कहना यह है, जो शून्य डीएक्शन के लिए नया नहीं है, जो पूरा डीएक्शन बना हुआ है, ये शून्य की कॉन्सेप्ट में ही बना हुआ है। शून्य का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन डिफरेंशिएशन है। नॉन डिफरेंशिएशन का मतलब भेदभाव नहीं है। तो इसकी वजह से ही की आधार रखे ही पूरा डीएक्शन शुरू हुआ है। डीएक्शन में अगर आप देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलकर काम करते हैं, सब लोगों को एक साथ लेकर आना, एक साथ मिलकर, सब लोग एक साथ मिलकर सक्सेसफुल होना, ये है शून्य का मेन कॉन्सेप्ट है। तो डीएक्शन में जो चीज है, डीएक्शन का जो प्रोडक्ट आते हैं हमारा शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और डीएक्शन का अभी सेकंड नया कॉन्सेप्ट डीएक्शन डॉक्टर ने लेकर आए हैं, जो शून्य है, वो हमारा माइंड को ट्रेन करना और हमारा माइंड को ट्रीट करना। ये शून्य, ये जो है, ये हमारा मन के लिए है, और इसे हम एजुकेट करते हैं पूरा दुनिया को और फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। और ये सुनियति इंटरनेशनल फाउंडेशन जो इंडिया में बना हुआ है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों को एक मदद करना और लोगों का जो भी है उनको एक छोटा सा बिजनेस शुरू कराकर उनको उनका खुद का पैर पर खड़ने का काम करना, ये इसका काम पर अभी सुनियति इंटरनेशनल फाउंडेशन काम कर रहा है। ये जो काम है डीएक्शन शुरू से ही कर रहा है, अभी इसे एक नया नाम देकर यहाँ पे रजिस्टर कर यहाँ से हम ये सफर शुरू करते हैं। ये है मकसद है शून्य इंटरनेशनल फाउंडेशन का। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को मदद करता है। Yes. Okay. So the last question is towards what we have done, RVC has done in training. Sound. On completion of 250 trainings through DXN RVC YouTube channel, even though through these difficulties of COVID-19 pandemic period, what do you feel, Dr. Lim, about virtual trainings and the future of majority of the time types given to virtual trainings, webinar, through this system? What percentage should be practical, direct seeing and physical meetings, and what percentage will do a good combination? Because in MLM, it is not only just selling the product, it is also maintaining the relationship of the people. They will have some things we have to answer, convince them, clear them, then only the product they can use. This is a little business wise, actually. So for that, what is your advice? Yeah. Only virtual, only virtual will be effective? Yeah, Professor and Doctor, you have done a fantastic job. Thank 250 days on training. Okay. You are, both of you are the only one in MHC, I think, can have such a 250. I never heard of any company doing that, So you are the Now, going virtual is already a trend, and it's already a necessity, Yeah. It's no longer an option. It's the only thing that we have to do now. Now in the COVID, everything is shut down, everything is thing. Going online training is the only way we engage with the market. One and the only way. Okay? And we found that actually our business in India are not affected. Even sometimes when excuse me, higher than the previous month. So compared to February, India is doing well, Latin America is doing well. Those countries that go for online, they are progressing like mad, Even in Malaysia. Okay, so that this virtual training, Professor, is the only thing in future. Okay, now both of you are doing a very good job. We should continue, We should continue. Like today, is another virtual communication training. Then we can see each other. Okay, actually, many members text me, they PM me, You say, Dr. Lim, we never seen you, But because of the COVID, after 1 week, 2 to 3 minutes, going to the Facebook, I feel very happy, Okay, so maybe
Professor, maybe this is a good thing. Yeah. Maybe it is a good thing. Okay, the DXN is designed for what we call sustainability. We build a with sustainability so that our management are crisis driven. Okay, we have a few months of buffer stock. Okay, the thing. Okay, so that when any crisis happen, we are prepared. We are prepared. Okay, this thing. We're in our training. We always tell member expect problem. Okay, we do not train people to succeed. No, Professor. We train people to face problem, to Yes. face failure. Failure is the mother of success. Success is just expected Yes. expected result. Okay, in what we are doing. So we train people to every day go for success. We train them to face the failure. Yes. And the online virtual training is very good, because we can fix the training what we call every week, every Yes. time, at a fixed date. And it is FOC, free of charge, free of charge. Then use, we do not need a very complicated thing. Then I use all the FOC open source, okay, Yes. to do the caps, to do the video editing, to do everything. Of course, some learning is there, but it's worth the learning. So I congratulate both of you, Professor, okay, and Doctor, Yes. okay. So Thank continue this what we call this Wasupa, this Yes. creation. Creation. Continue on online, okay. Those, okay, I support you as much as I can. Okay, it's a very good thing, Professor. Congratulations. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. एक तो लास्ट सवाल था डॉक्टर रत्ना से डॉक्टर लिम को, जो आरबीसी का जो 250 डेज का जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चला, ये जो वर्चुअल मीटिंग में एक हंगामा मचा रहा है आरबीसी पूरा दुनिया में डीएक्सन की तरफ से, ये डॉक्टर लिम का कहना और मानना क्या है? ये वर्चुअल मीटिंग का फ्यूचर कैसा होने वाला है और एक वर्चुअल मीटिंग का नेसेसिटी कैसा होने वाला है ये फ्यूचर में? तो डॉक्टर लिम ने पहले कंग्रेचुलेशन दे दिया है, बिकॉज डॉक्टर लिम को भी सरप्राइज हो चुके हैं। 250 दिन, हर दिन कंटिन्यूअसली मीटिंग, कोई छुट्टी नहीं है, कोई बुधवार नहीं है, कोई शुक्रवार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई शादी नहीं है, कुछ भी नहीं, पर 250 डेज लगातार ये प्रोग्राम चला है। और डॉक्टर लिम ने यही बोला था, ये सिर्फ एक ही एमएलएम का टीम मैंने सुना था और सिर्फ एक ही लीडर मैं दुनिया में सुन रहा हूँ। तो प्रोफेसर और डॉक्टर, ये जो 250 डेज कंटिन्यूअसली ये प्रोग्राम चला रहा है, तो ये वर्चुअल करना अभी एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा इन फ्यूचर में बिजनेस कराना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, तो इसीलिए वर्चुअल मीटिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण से जो कंट्री ने वर्चुअल मीटिंग किया है, जैसे इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग किया है, तो इसलिए इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। जो अमेरिका ने, जो मलेशिया ने, जो कंट्री वर्चुअल मीटिंग का तरफ चला गया है, उनका परफॉर्मेंस जो भी डाउन था उसने फौरन बाउंस बैक किया और बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इसीलिए जो भी क्राइसिस आ रहा है ना, डीएक्सन इसीलिए पता है, डीएक्सन इसीलिए सक्सेसफुल है, ये क्राइसिस को मैनेज करने में डीएक्सन एक बहुत बड़ा लीडर है। तो इसीलिए जो भी मैनेजमेंट पीपुल है उनको भी हम ट्रेन कर चुके हैं, जो हमारा क्राइसिस है उसे हम कैसे ड्राइव करेंगे। सो डॉक्टर लिम का यही की कहना है, जो भी डीएक्सन ये ट्रेन नहीं करता है लोगों को सक्सेसफुल कैसे होना, डीएक्सन ये ट्रेन करता है लोगों को फेलियर को कैसे मुकाबला करेंगे और फेलियर को कैसे सक्सेसफुल की तरफ लेकर जाना है। ये ट्रेनिंग, ये क्राइसिस मैनेजमेंट डीएक्सन का एक बहुत खासियत है। हर एक बंदा को सिर्फ डीएक्सन बिजनेस में नहीं है, उनका पर्सनल लाइफ में भी ये जो कमाल की जो चीज है उनको हेल्प कर सकता है। इसीलिए ये जो वर्चुअल मीटिंग है ये बहुत जबरदस्त है। तो अगेन डॉक्टर लिम ने कंग्रेचुलेशन दिया है प्रोफेसर को और डॉक्टर को 250 दिन का ये फ्री ऑफ चार्ज जो मीटिंग है, एफओसी मीटिंग जो दोनों ने किया हुआ है, और पूरा सपोर्ट डॉक्टर लिम देने वाले हैं ये आरबीसी को फॉर दिस नेक्स्ट, और कंग्रेचुलेशन दिया है और कंटिन्यू करने के लिए भी बोला है ये वर्चुअल मीटिंग फॉर द फ्यूचर। तो थैंक यू प्रोफेसर। Thank you very much. Thank you very much, sir. Our objective is to see that we will slowly and steadily switch over to more virtual meeting, because one is we have now this COVID has given us an opportunity to go online or use technology by force because most of us were
we are forced to do because I never went for Zoom or YouTube, nothing before Corona. And this Corona taught us a lesson. You cannot go out. You are becoming old. You have to be safe and stay healthy at home. And still you can continue. The beauty of this industry is you can stay at home and build your business. So this lesson we learnt very effectively. We started implementing that, and initially we started thought of having 2-3 meetings per week. Afterwards, because of the popular demand by our leaders also were ready to lend their support as speakers. Hence, we could select the speakers all over India, each day one person. And because of that, only technical help and technical background, thanks to Rupal and Mr. Mani and my son Yogendra, because these are all software engineers, they also came very handy for us to develop technology for DXN. And because I am a computer illiterate, I don't know much. Only while they make everything ready, I will press the button. And yes, that is why we were initially hesitant how it will be, because India, as you know, such a large country, and Bihar, Jharkhand, and this Chhattisgarh, such very remote villages, even West Bengal, even southern India, some parts of India, villages where DXN business is coming from villages even now, and getting the leaders from that remote village as a speaker, because of the problem of technology, disconnection, internet stability is not there. But all these challenges we faced, making the speaker to move to the nearest town for the sake of their training day. We connected them to good stock point where there is internet and asked them to travel 10-20 kilometers to the stock point to make the presentation between 7 to 8:30. And all these things we learned how to manage the things steadily, consistently, and see that our training will continue, and motivation and people mood will not come down, because they are worried, because so many people were in problems facing movement and all these social distancing. Government is locking down us and transportation is not there. They were so much worried, but this very smoothly transition took place to the virtual. I am sure that our future training is going to be more virtual than physical. Of course, the physical, once everything settles down, wherever we can have recognition night, such things, it will to motivate people physically seeing the real, excitement. I'm not saying that that cannot be, replaced by virtual, and we can have a perfect combination for both once peace comes or real movement comes. But now we learnt a lesson of survival in this pandemic period. Yeah. We survived now. Yes. We survived, Professor. Yes. Before we are closing, I request Dr. Ranjan to close, and his as one of our most adored and respected, highly qualified doctor, who also, equally sacrificed along with us. He is a backbone to RVC. RVC would not have been very strong but for the leadership like Dr. Ranjan. Hence, naturally, I must thank him for every support, every day, every guidance. More than a friend, he is everything for us. And the care which he takes on my, personally on my health,
I must thank him always because he is worried. Don't strain like Dr. Lim. Always he advises me, don't give stress, don't strain, don't strain, be relaxed. The same way Dr. Ranjan every time he has a great concern on me and Dr. Ratna. I must thank him. But anyhow, our social cause, this I have taken. RVC is a social responsibility, sir. Like your SIF, this is also totally socially responsible organization to develop the skills of the people in MLM industry. We have from the day one RVC earlier in the name of Osupal creation, even 2002, 2003, 4 and all, you have come to my leadership camps all over India. I think hardly you would have left any leadership camp organized by RVC from the beginning. And you have said you have been supporting us by sending lot of international leaders. Still I remember while you sent leaders from Australia, Tina and Robinson, and earlier days like Tajuddin from Malaysia in 2003-4 and from first time he was coming to India and first time delivering his speech in English. he told that I am delivering my speech in English first time. And that was the reason why we have been able to build a big organization. From the side of RVC, as a founder, I assure you, our dream is your dream and your dream is our dream. So what you think about DXN, to make this DXN company number one company in the world, until then we are not going to rest, whatever it comes. Yeah. The day we see DXN as number one direct selling company in the world, I think that day afterwards some rest I may require. Until then, we are not going to rest. Let it take 3 years or 5 years, 8 years. As you said, in next 10 years, we have a really very good period because we are now matured company. We have all the overhead and infrastructure ready, and your vision of investing in India, such a huge amount of money and making all the products in India, make in India, make in India, that is the slogan of the government of India. And you have rightly started at a right time, right place, and with the right vision, because the government now says make everything you make in India. And you are not only making in India for Indians, you are going to export all DXN products from India, because India is going to be DXN world headquarters. Sir, we are very excited about that, and we fully assure you from the side of my organization, we back you solidly, stand behind you, behind DXN like a rock in any type of crisis. We have seen many crises and many wars we fought to make DXN stronger. And I assure you, from the side of my network all over the globe, we are one. We will take a united action. We will display our united strength. And we assure you, every DXN member will be allowed to grow irrespective of which line he belongs to. We don't have any cross line, any this line. Once they say DXN member, we give them the free training, free support, free knowledge. No question of telling which team you belong to, which line you belong. Malaysia line, Philippines line. I am very happy. Malaysia leaders also plug in with India, particularly Tamil leaders. The last Dr. Ranjan's leadership, they have been conducting lot of Tamil meetings. Whole Malaysia Tamil group is coming online meeting as a one family. One world, one market, one world, one DXN, one world, one family. Definitely, that is your dream, our dream. We together, when we make it. Yeah. Yes.
And naturally, while we realize that one day as a DXN, one world, one family, and everybody working on this direction, days are not far off where we are going to be number one direct sell company in the world. Thank you for your presence, sir. And Dr. Ranjan is there to conclude. I request Dr. Ranjan to conclude and thank our founder and our IMD on this session. So good morning, DXN once again. So it's my great privilege to thank DATUK Dr. LIM for taking part in this, great occasion. And from the family of RBC, I guarantee that we will give quality trainings all over the world through this online platform. And as you rightly said, this is the only way to sort of reach millions and millions of people all over the world promoting health. I also thank Mr. Rafiq, our IMD, who is supporting us. DMI, there is a DXN India, a young, energetic, and very dynamic administrator, I should say, because we can approach him anytime. But thank you, sir, for giving Mr. Rafiq to us. So that's a great help, we have done. And I thank Rafiq for participating in today's function. Instead of me concluding, I thought Datuk Dr. LIM should conclude the session and the carry home message, sir. So thank you very much. And I thank Professor for his kind words, Professor and Dr. Aktana. And of course, we have been like one family, and we will continue to serve DXN. And I'm sure in 2021, in the year 2021, India will make history and great strides. We assure you on behalf of RBC, sir, and with the management support, we are sure to achieve that. So we want your concluding remarks, sir. Thank you. And carry home message. Yeah. Very good. Yeah. So I think Dr. Ranjan, you already concluded very well. Okay, there's nothing much for me to say. Okay, I take this opportunity. Okay, that we are going to make India. Okay, the epic center of DXN. Okay, so we're going to make India the HQ of DXN. Okay, we're going to make India the center of Sunya, of everything of DXN. Okay, so that from today onward, I think this is the target for us. Okay, one world, one market. Okay, one world, one world, one market, one world, one products, one world, one family, one world, one bank account. Whatever it is now. In India. So, Professor and also Dr. Ranjan and Rafiq, thank you. Today is a very fantastic program. Okay, I feel so happy. Every time I'm meeting people from India, I'm feeling happy. Okay, so good night from here and good morning. Sir, one word you remind is for you. 27th December Freedom Day, again going to be a big show. 28th, please note down in your diary. Yeah, 2 more weeks. So yes, I'll be online. Online. More than happy. Okay, more than happy. Good morning. So, Professor. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Thank you.